felt energized, I felt awake. Empowering rural communities. I was a heavy smoker, drink like a fish, but now, just quit, just stay that. They're preserving the environment by promoting natural farming, cleaning the planet, planting trees, and reviving rivers. In situations where war seemed like the only outcome, Gurudev was instrumental in creating peace. Brought peace in Kashmir and Naxal-affected areas. We had been taught to operate guns, arms and train other youths. But now, after doing the Art of Living course and meeting Sri Sri, we realized we had chosen the wrong path. Ended a civil war in Colombia. If there's one country in the world that has to be in total gratitude with you, it's mine. And has spread peace in the Middle East. For his humanitarian efforts and peace initiatives, Gurudev has been conferred with numerous awards, including the highest civilian award of Colombia, Mongolia, Paraguay, one of India's highest civilian awards, and 25 honorary doctorates globally. The Art of Living has an incredible following that cuts through all religions, cultures, and backgrounds. A very difficult thing to do in today's world. The first World Meditation Day. Today is a day which all the meditation teachers around the world would be rejoicing. Meditation transcends borders, faith, traditions, and time, offering each of us the opportunity to pause and to connect with our inner selves. Meditation emerges not merely as a personal practice, but as a powerful instrument of diplomacy. Today, meditation is not a luxury as it was thought, but it is a necessity. Just as we nurture our bodies with exercise, meditation allows us to nurture our mental well-being, providing clarity and peace. We see the importance of meditation, and we are here to celebrate the first World Meditation Day. Meditation helps us to be more centered. It brings us sensitivity and sensibility at the same time. Meditative practices provide the essential ingredient in creating peaceful individuals. There was a time when people were going in search of meditation, search of enlightenment. But today, meditation has to go to every door, every home. So now, shall we start a short meditation? Let's keep our eyes closed.
Srinivas. It's the witness statement for record claim. Yes, that's the one. That's That's the the one. one. Yep, Yes, that's what I'm putting. Yep. Yeah. Normally, I'd be on site with you guys, and then we'd just walk through it. You know, you use a pen. But as And what would be the title? What's the title of this? that's we'll say most concurrent viewers of a guided meditation live stream on YouTube. It's on the So we are live. Say again? We are live. Oh. We're live. We are live. I will spotlight you, Prabji. Yeah, you can spotlight me and we can take it from there. Tell me when you to go. You're good to go. Shamji, we're good to go. Go ahead. Well, good morning, good afternoon, good evening. I know this event attempt has been taken right across the globe. Absolutely delighted to be here on behalf of Guinness World Records to adjudicate the record for the most concurrent viewers of a guided meditation live stream on YouTube. My name is Pravin Patel. Like I said, delighted to be here. Thank you, The Art of Living, for inviting me. Now, this is a new record, and we have set the minimum, not 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, but at 17,000 concurrent viewers. Now, I ask you to remember that number, 17,000, because I might ask you, I might not get any feedback from you, but I might ask you, it is 17,000 you need to beat. But it's not just about the numbers. It's very important that you meet the numbers, but you also meet very strict set of guidelines that we've set out for this particular attempt. I will just go through some of the key points. This record is measured by the peak number of concurrent viewers of the live stream. A guided meditation is the practice in which an individual or individuals are led through others as to induce a mode of consciousness in silence or with the aid of chanting for religious or spiritual purposes or a method of relaxation. The live stream must be hosted from a single channel on YouTube. The live stream must be performed live and not be pre-recorded. The live stream must last at least 10 minutes. And the live stream must stay on topic all the time. Okay, here we go. The meditation must be held or led by an individual who is experienced in the practice of the form of meditation being live streamed. One of the witnesses must be an expert in the field of meditation. So I had Pawanji Taylor who helped me to do this. And one of the other witnesses must have an experience in YouTube analytics or live streaming. And I had Srinivasji for helping me do that. I have a lot more on the guidelines, but I won't go through all of them. So you'll recall we've set the minimum at 17,000. And so with a total of 344,284, The Art of Living, you are the new Guinness World Records title holders for the most concurrent viewers of a guided meditation live stream on YouTube. Congratulations. You are officially amazing. I'm hoping you're all clapping and shouting and jumping up and down. I can't hear you, but I'm absolutely delighted for you. All I can say is I'm absolutely delighted for you. And I'll cut away, or they'll cut away when they're ready.
I'm hoping somebody tells me to stop holding the certificate up because I want to give it away to you guys when you're ready. I think we are done. Thank you. Thank you. Are we offline? Well, you want to confirm? Just 1 second. Jai Gurudev. My name is Nikhilesh Bharadwaj from Sri Amoga Junior College, Hyderabad. We have been running Meda Yoga program for last 2 years and we have seen great change among students. But some students these days, we have noticed that they don't show interest in anything. Na studies mein, na sports mein, na extracurricular, na arts. They don't show interest in anything, even in meditation. As an educator, should I try hard or should I let it be? Is there a role of destiny also to get into this path for the students? No, you can't just let them do what they want. You have to gently persuade them. You know, training children is like riding a horse. You can't hold the reins too tight, then it won't work. You can't leave it so loose, then it will go wherever it wants. Like the string of a guitar or sitar, if it is too tight, no music will come. If it is loose also, no music will come. You have to tighten a little bit and see that at the same time your tightening is productive. बच्चों को डांटना आवश्यक है, मगर हमारी डांट से प्रयोजन होनी चाहिए. जिस कारण के लिए डांटते हैं वो कारण उसमें अचीव हो जाना चाहिए. जिस लक्ष्य के लिए उनको डांटते हैं उस लक्ष्य हमें हासिल करना चाहिए. You know, you have to achieve your goal even if you want to be little strict with the children. That is the whole skill in handling young minds. Persuasion, cajoling, then little bit creating them a little caution. Hey, if you don't do, look, you are going to, this will happen. Giving them a little caution, all that is necessary. Jai Gurudev. Shiv Arya from Cambridge International School, Sangrur, Punjab. पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सब स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ से. आपने हमें जो मौका दिया आज MOU साइन करके ये कोर्सेज हमें यहाँ पर हम अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में चला पाएँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. हमें एज ए स्कूल आजकल एक बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज आ गया, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था. एज ए पेरेंट्स भी, क्योंकि आजकल ADHD बहुत कॉमन हो गया है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. उसको लेके पेरेंट्स को लगता है सोशल स्किमा की वजह से वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ऐसा. और कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी टीचर्स पर उन बच्चों पे अच्छे से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है इनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है. तो गुरुजी आप हमें गाइड करें कि ऐसे बच्चों पे हमें कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लोगों के लिए आने वाली है, जो मुझे लग रहा है. धन्यवाद. ये ऑलरेडी दुनिया में सब जगह है ये बात. ADHD सिंड्रोम सेल फोन के साथ साथ पैदा हो गया.
बच्चों को सेल फोन देना नहीं चाहिए। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में इसको देख के 16 साल के नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। हमारे देश में भी छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल अभी उनको पूरी तरह से बोलना नहीं आता, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। ये सही नहीं है। ये इनके जो पोषक वर्ग को भी प्रशिक्षण करना आवश्यक है, माता पिता को भी प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसमें आपको पता है क्लासरूम क्यों 40 मिनट का या 50 मिनट का रखा गया? पहले एक क्लास 40 मिनट का होता है ना, 50 मिनट का होता है ना, क्यों? हाँ, साइकोलॉजिस्ट ने तय किया था इंग्लैंड में, अभी नहीं 30-35 साल पहले, 35 और ज़्यादा, 50 साल पहले क्लासरूम इतना ही होना चाहिए। इसके बाद बेल होता है, दूसरा टीचर आता है क्लास, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन उतना था, 40 मिनट था। आज पता है कितना है? 30 सेकेंड। आज अटेंशन स्पैन कम हो गया, 30 सेकेंड। इसलिए योग की जो शिक्षा है ये अति आवश्यक है। यही अपना कराते हैं मेधा योगा, प्रज्ञा योग में इनको ऐसे खेल खेल में योगा सिखाते हैं। वो करते भी हैं बच्चे, वो करने के बाद इनको बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, फिर फोकस आने लगती है। हमारे देखिए, आप इंट्यूशन किड्स को देखिए, बहुत फोकस्ड है। यहाँ तक हमने देखा है कुछ बच्चे जो अमेरिका में पढ़ते थे और उनको वो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर भी बोल दिया था, ऑटिज़म कह दिया था डॉक्टरों ने। बॉर्डर लाइन माने वो सही नहीं है जिस तरह से। तो और ये प्रज्ञा योग तो वो ऐसे कर रहा था वो बच्चा, 15-16 साल का लड़का, उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। लोग चौंक गए, ऐसे ये बच्चे, और हर स्कूल से वो बच्चों को डिसमिस कर दे। फिर होम स्कूलिंग करना पड़ा उसको, पेरेंट्स को। कोई भी स्कूल में वो रखना नहीं चाहता, इतना उद्दंड था व्यक्ति। ये सब प्रैक्टिस करके साल भर के अंदर वो बच्चा एकदम एक्सेल करने लगा। इसलिए इसमें विश्वास करना चाहिए, चमत्कार संभव है। और भारतीय ज्ञान के साथ चमत्कार तो साधारण बात है। जय गुरुदेव। गुरुजी, योग ज्ञान विज्ञान द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन करके जो परमोच्च आनंद गुरुदेव द्वारा निर्मित क्रियाओं से हमें मिलता है वो अतुलनीय है। जिस प्रकार सारे वॉलंटियर्स ही नहीं तो संपूर्ण भारत ही नहीं तो संपूर्ण वसुधा जो आपका कुटुंब है, जहाँ का हर एक व्यक्ति आपसे निरपेक्ष प्रेम और आदर करते हैं, इसी तरह कैरेक्टर बिल्डिंग इज इक्वल टू नेशन बिल्डिंग जिम्मेदारी है हमारी सभी विद्यालयों की। गुरुदेव, आप जैसा प्रेम आदर हमारे विद्यालय के शिक्षक एवं अध्यापकों को उनके विद्यार्थियों से प्राप्त करने हेतु हमारे उन अध्यापकों को और हमारे उन शिक्षकों की भूमिका के लिए आपका अमूल्य मार्गदर्शन करें। पहले तो अध्यापकों को भी साधनारत होना आवश्यक है। क्यों इतना प्रेशर रहता है अध्यापकों के ऊपर? वो फिर गुस्सा आने लगता है। स्कूल में गुस्सा करेंगे, नहीं तो स्कूल में दबा दबा के घर ले जाके घर में सब पर बरस पड़ते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है अध्यापक भी अपना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, समयोचित भोजन करें, कालोचित भोजन, अपना आयुर्वेद के जो दिनचर्या ऋतुचर्या का वो है एक नियम है,
उसके हिसाब से देखा जाए हम अपना नाड़ी कैसा चल रहा है, वात पित्त कफ कैसा है, दोष समदोष है कि बैलेंस है नहीं बैलेंस, तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक मैं समझता हूँ। ये करेंगे और वो भी जो है ना प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं, गार्डनिंग वगैरह में पौधे वौधे लगाना या शाम को वॉक करना या इस तरह से संगीत सुनना। खासतौर से जो लोग बहुत बौद्धिक काम करते हैं उनको संगीत सुनना बहुत आवश्यक है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन तो होता है ना, तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, गणित का काम ये सब करना, इसको बैलेंस करने के लिए हमें राइट ब्रेन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो संगीत सुनने से होता है। इसलिए संगीत सुनना भी आवश्यक है। अब संगीत क्या करते हैं, हम साथ में गाते रहते नहीं, थोड़ी देर आंख बंद करके सुने, उसमें ऐसे लाइव हो जाना चाहिए। इस तरह से करने से भी विश्राम मिल जाएगा। और हर टीचर को ये समझना चाहिए वो भी स्टूडेंट है, रोज कुछ ना कुछ नई चीज दुनिया में होती रहती है, वो सब सीखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जय गुरुदेव। हाँ Guruji, I am Dr. Kiranpal Singh Chawla from Bilaspur, Chhattisgarh. Please guide for those parents who feel helpless in front of their children's unreasonable demands when the children threaten them about suicides or any self-harm actions, and these parents really feel helpless, and then how to guide these parents? Thank you. It has to be very specific. The specific cases will have to be addressed separately. So counselor need to be with them. If children are throwing tantrums, making all this, they need, that's why teachers will have to intervene. Parents will not be able to help at that time. If the teachers are friends, they have to influence the child to not to commit suicide and all that. Sometimes, you know, the teenage kids are, it's so difficult to connect with the parents, with teenage kids particularly, because their hormones are changing in the body, so their demands are high. And though they had so much love for the parent, the anger to the parent is also becoming more there. So for that, they need to be given special attention, care for such children. It can't happen overnight, but gently they have to be persuaded to do that. Good. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Gurudev. Guruji, here is a question from education institution again. Important question one. आपने जो इनिशिएटिव लिया है, it is very great initiative. बहुत कम डोनेशन में हम ये कोर्स दे रहे हैं, आप ये कोर्स दे रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आपने अभी बताया कि कोर्स करने के बाद पेरेंट्स का एक्सप्रेशंस क्या रहता है बच्चों के बारे में। एट द सेम टाइम किसी संस्था चालक ने यहाँ पे पूछा कि कोर्स करने के बाद भी बच्चों में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये लगता है अगर ऐसा ही ड्राइव हम पेरेंट्स के लिए चलाएंगे और पेरेंट्स अगर ये कोर्स करेंगे तो दे कैन कॉन्फिडेंटली टेल देयर किड्स टू डू द क्रिया एंड मेडिटेशन। पेरेंट्स अगर व्हाट्सएप देखते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे और बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो क्रिया करे और मेडिटेशन करेंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। और ये जो इनिशिएटिव, फॉर एग्जाम्पल से मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र में आपके आशीर्वाद से जैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिले बीजेपी को, इस इनिशिएटिव के माध्यम से सिर्फ चिल्ड्रन के ही नहीं सभी कोर्सेज बढ़ जाएंगे अगर हम सेम ड्राइव पेरेंट्स के लिए चलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाफ डोनेशन में पेरेंट्स को ये अलाउ करेंगे
तो नॉट ओनली किड्स कोर्सेज बट सभी तरह के कोर्सेज बहुत ही लैंडस्लाइड की तरह से बढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है। क्या ये आप कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू पेरेंट्स गुरुदेव। के लिए भी हमने पेरेंट्स के लिए भी किया, नो योर चाइल्ड, अपने बच्चे को जानो, और नो योर टीन्स, तुम अपने जो टीनेज बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी थोड़ा समझो। ये 4 घंटे का कार्यक्रम है, 2 घंटे 2 दिन का, इसमें काफ़ी पेरेंट्स को इसकी कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना आ जाता है। हाँ जय गुरुदेव। हाँ Gurudev, being in armed forces of India, we have to face tremendous stress and mental pressure at workplace. Sometimes this affects family life also. How do we handle these situations at workplace itself? See, when you take a shower at home and you go to work, you feel fresh, right? You have food and then that gives you energy, then you go to the workplace, it helps you there. You don't eat while you are working. You have a time for recuperating your energy. You have a time for refreshment. Refreshment, that's why it is called refreshment. You eat something, it gives you a little more energy. But these days the refreshments are not refreshment, retirement that is. It tires you more, the so-called refresher snacks. So meditation is the best refreshment. I always recommend for all officers to do M&M, meals and meditation. Yeah, meals together, share a meal together. Everybody sit and eat food. Before that, meditate for 15-20 minutes. Gurudev, does the mind belong to the body or the soul? We think our mind is inside the body. But you should know, our body is inside the mind. Mind is bigger than the body. From one angle, everything is connected. Like the water vapor, water and ice, they're all connected. More solid, what appears to be more solid is the body, and more visible is water, and little more is the humidity in the atmosphere which you can't see, but it's still there, right? If there is no water in the atmosphere, you would feel suffocated, right? You know that? There is no humidity in the atmosphere at all. You feel so dry, you can't even breathe properly. So, there is water vapor everywhere, and there is water which is more visible, and there is more solid ice. In this way, body is the ice, mind is the water, and soul is the water vapor. हिंदी में एक पूछ लेना, उसके बाद ध्यान करेंगे। गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो पौराणिक कथाओं में वर्णित कई व्यक्ति अमरता की मांग क्यों करते थे, और जब उन्हें अमरता का वरदान मिला तो वास्तव में उन्हें क्या प्रदान किया गया था? अमृत किसे कहते हैं? जिसे देवताओं ने पिया था वो? ये तो बहुत सारा प्रश्न हो गया भाई। नारद महर्षि जी की वाणी से देखोगे तो एक ही चीज अमर है, वो क्या है? प्रेम। अमृत रूपाश्च, प्रेम कैसा है? अमृत रूप। वह प्रेम मरता नहीं है, ढक जाता है, छिप जाता है, गायब नहीं होता, मर नहीं जाता। और प्रेम ही परमेश्वर है। इसी में तुम समझ लो, बाकी सारे तुम्हारा प्रश्न जो है इस एक सूत्र में तुम सब उसका उत्तर निकालवा लो।
सबसे पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र दूसरा ही सूत्र है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? उसमें परम प्रेम। और प्रेम क्या है पूछोगे तो अरे इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसको कोई तुम बता ही नहीं सकते हो। प्रेम नहीं पता है? प्रेम तो पता है सबको, जन्म हुआ प्रेम से। बच्चों की आंखों में देखो, कुत्ते की आंखों में देखो, और सबके आंखों में देखो, देख सके तो देखो, सब जगह प्रेम ही प्रेम है। आप प्रेम के स्वरूप ही परमात्मा है। अमृत स्वरूपाचा, दूसरा ही सूत्र बोले ये अमृत है, अमृत स्वरूप है। हाँ, बाकी बाद में आराम से सब पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मगर अभी तो ध्यान करेंगे। क्या ख्याल है ना? हाँ, और क्या आराम से बैठ जाइए। Gurudev, today is Kal Bhairav Jayanti. Request you to kindly throw light on the meaning of the verses of the beautiful composition of Adi Shankaracharya, the Kala Bhairavashtakam. Kal Bhairav is the form of Shiva who rules over time. So what does he do? He gives, bestows all goodness, all type of siddhis and prosperity, confidence, knowledge, everything. It's just Shiva's another form. That is, it's a vichitra. In life, it brings all very peculiar incidences. All surprises in life, peculiar incidences. All that happens through the grace of God. So this is one of the attributes of Lord Shiva. So Kashi is not just a place there, Varanasi. Of course it is also, but the third eye part is called Kashi, where both the Ida and Pingala meet. The left nostril and right nostril merge into the spot in between the eyebrow. This is the seat of, this is called Kashi. And that, the Lord of that, the Shiva, who is also the Guru, who is also everything, that pure energy is Kala Bhairav. ये शिव का ही रूप है। महाकाल, ऐसे काल भैरव। काल भैरव को तो कुत्ता वाहन है। कुत्ता ज्ञान का प्रतीक है। चारों वेदों को कुत्ते के रूप में देखा। माने लॉयल्टी है उसमें, माने निष्ठा। और काशी वही है, भ्रूमध्य की जो आज्ञा चक्र है, उसी को काशी बोलते हैं। तो ये जो स्थूल अर्थ एक होता है और सूक्ष्म एक और होता है। जो काल के ऊपर विजय पाले वही काल भैरव है। तो हम चेतना का ही एक गुण
क्रिया और लक्षण है। सब कुछ काल का अधीन है ना, हिंदी में कहते हैं काल करे सो होय, काल करे सो होय। और वो काल के अधिपति तो वो शिव ही है, सारे ग्रहों के ऊपर शिव बैठे हैं और शिव का ही रूप है काल भैरव। भैरव माने ही समझो तो जो व्यक्त जगत है इससे ऊपर उठ के अव्यक्त में जो है, जो आकाशवत है, वही भैरव का रूप है। और जो देखते हैं ना, जो दिखती है, इन सब का कंट्रोल कहीं और है, मेन स्विच कहीं और है। अब बिजली सब जल रही है मगर इसका स्विच कहाँ है? पता है आप लोगों को? नहीं पता ये सब का स्विच कहाँ है, कहीं है, छिपा है। वो स्विच जो है वही काल भैरव है। तो जीवन या शिव ही आध्यात्मिक चेतना है। जैसे जमीन पे हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, अन्न उपजता है। अन्न कहाँ से उपजता है? जमीन से उपजता है। ऐसे खुशी आनंद कहाँ उपजता है? आकाश में उपजता है आनंद। तो आकाश में हल चलाओ, वहाँ मंत्रों का बीज बो, तो वहाँ से जो फल आता है वो आनंद है। तो वो आकाश में हल चलाने वाला काम तो काल भैरव को, काल भैरव माने ये व्यक्त संसार जो दिगंबर, काल भैरव के दूसरा नाम है वो निर्वस्त्र है। कोई वस्त्र नहीं है काल भैरव के, निर्वस्त्र माने आकाश को कोई कपड़ा पहना सकते हैं क्या? ढक सकते हैं क्या? कोई चीज़ आकाश को ढक नहीं सकता, ना उसको धूमिल कर सकता है। काल भैरव को कोई मैल नहीं कर सकते, मैल छूता ही नहीं हूँ, इसलिए उनके लिए सब स्वीकार है। भगवान शंकर दतूरा भी लेते हैं और फूल भी लेते हैं, पत्ता भी लेते, सब कुछ। माने जो समग्र सृष्टि की जो मूल है वो आकाश, और आकाश के परे जो है वो शिव तत्व है, वही काल भैरव। काल के भी परे भैरव जो है वो काल के, अपना अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस एंड टाइम। वो स्पेस भैरव स्पेस है, टाइम काल है। स्पेस एंड टाइम के बाहर जो जाता, माने देश और काल के बाहर की जो सत्ता है वही चैतन्य है। अभी वैज्ञानिकों ने कहा ना, हर चीज़ में जान है, माने हर चीज़ की अपनी चेतना है। हम लोग को लगता है मरा हुआ है, ये लकड़ी का टुकड़े में कोई जान नहीं, वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, हर चीज़ में चेतना है। दुनिया में देखोगे तो सर ग्रह उपग्रहों में का भी अपना चेतना है, मन है। ऊपर से देखोगे तो हमको लगता है पेड़ का कहाँ मन कहाँ है इसका, नहीं, पेड़ का मन है। सूक्ष्म ढंग से देखेंगे तो पेड़ में भी वो भाव है, मन है। कोई कुडाली लेके आता है तो उनमें घबराहट की तरंग उठते हैं, और कोई पानी लेके आते तो पेड़ खुश होने लगता है। तो इस तरह से भाव जो है प्रकृति के कण कण में दिखता है। जब प्रकृति में दिखता है, अभी तो वैज्ञानिक कहते हैं सारे ब्रह्मांड में भाव ही भाव है। इसीलिए हम लोग ये नवग्रहों की पूजा वूजा करते हैं ना, माने वो नवग्रहों के बारे में सोचो, उनके मंत्र बोलो तो माने वो तरंग से हम जुड़ जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं। आप अपने रेडियो में, अपने चैनल में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करोगे तो क्या होता, वही फ्रीक्वेंसी आता है कि नहीं, वही डाउनलोड होता है कि नहीं तुम्हारे उसमें, तुम्हारे अपने आईपैड में या फ़ोन में
तुम YouTube का लगाओ तो YouTube आएगा, म्यूजिक का लगाओ तो वो आएगा, फोन लगाओ तो वो आएगा। सब कुछ वो छोटा सा एक प्लास्टिक के टुकड़े में तुम सब कुछ देख लो, दुनिया भर का खबर उसी से मिल जाता है, उसी के अंदर है। कैसे संभव? क्योंकि ये जो खाली जगह हम देखते हैं आकाश, ये आकाश चेतना से ठूस ठूस के भरा हुआ है, और इस चेतना में जान है, जीवन है, उसमें ज्ञान है। देखो क्या कब लोगों ने बस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत है वो ज्ञान भी है, और वह सत्य भी है, वो जीवित भी है। गजब की है कि नहीं? मन को चौंकाने वाली बात। ऐसी भैरवी चौंका देता, वाह कर हमारे भीतर। You know, the whole universe is full of consciousness. Everything is consciousness. Every object has life, because everything is just vibration. Consciousness is nothing but vibration. That is it. So enjoy the vibrations. And you are the vibration. You are that vibration. When you become quiet and serene and settled, and you are the source of all the vibration. So you are not separate from the universe. You are part of the universe. So your body has come from this planet Earth. This body is part of the earth. But we don't feel that. When we feel that, it becomes meditation. When we feel this body is part of the earth, and the spirit is part of the divinity which is all over, that is spiritual elevation. Whatever you do, you just know, you just need to realize the truth. The fact is, your body is from the earth, and it is going to go back to the earth. It's going to stay here. Your body is not going to fly to the heaven or go to sun. It is part of that, and you are going to be here. And your spirit is light, and it belongs to the universal spirit. The air in you is part of the air that is all around you. You can't hold your air. I take a deep breath, this is my air, I'm not going to let go my air. No, you can't. You have to breathe out. Only then you will be alive. When you breathe out, you breathe in. You are one with the air that is all around you. But have you ever felt that the air inside you is part of the air all around you? No. Because our mind is so busy all the time, engaging ourselves in this or that, many times useless things. 85% of the worries that we have never happens. This, you must say kudos to those researchers, because they couldn't find anything else to research. They embarked on this subject to let us see how much worry people do, whether that happens or not. And 10 years, the two researchers spent their time studying, listing out people's worries, and whether those worries have come true or not. And the finding is 85% of the worry a person has never happens. See how much time we waste? And the 15% of the worry which is left, in that 15%, 14.5%, they could easily manage. When it happens, they could manage it. Only 0.5% of the worries, they struggle with it, it stays with them for a little longer time. So, if you are worrying 100%, 0.5% chances are there that it gives you a problem. Rest of the worries are useless.
I mean, waste of your time. I don't think those people have taken into consideration those people who are doing sadhana, meditation, pranayama, kriya. Otherwise, even that 0.55% will not be there too. Then that will not happen. So worry is also a machine. It's like a machine that produces toxic air inside of you. Toxic vibration. And the antidote is meditation. Yeah. So shall we do a short meditation instead of talking more and more? Huh? Know that everyone is like fire. See, your body is like a wick of a candle, and your spirit, your mind is like the fire all around it, the glow. So feel the feeling that this body is part of the earth. The air inside me is part of the air all around me. Just that one little shift in your attention from the happening outside to the one who is experiencing the happening. Attention